हेलो डियर फार्मासिस्ट, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फार्माक्रा ओडिशा। तो आज हम क्लास करेंगे फार्मेसी एक्ट एआईसीटी ये एक्ट। ठीक है। तो पहले हम 40 क्वेश्चन तक एमसीक्यू कर लिए थे और अब हम बाकी 60 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। तो चलो बिना किसी देर से आज का क्लास शुरू करते हैं। Question number 41. According to the provided material, that executive committee includes other members numbering. Option A 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 10। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन सी इज द आंसर। ऑप्शन सी इज द आंसर 5। ओके। कितना मेंबर होता है? 5 मेंबर। क्वेश्चन नंबर 42. द प्रेसिडेंट ऑफ द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज ऑप्शन ए परमानेंट ऑफिस होल्डर फॉर लाइफ, ऑप्शन बी सब्जेक्ट टू द statutory term and reconstitution provisions, option C appointed by every state council, option D elected by all pharmacists in India directly। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन डी इलेक्टेड बाय ऑल फार्मासिस्ट, ये आंसर नहीं है। अपॉइंटेड बाय एवरी स्टेट काउंसिल, ये भी आंसर नहीं है। आंसर क्या है? ऑप्शन बी इज द आंसर, सब्जेक्ट टू द स्टैट्यूटरी टर्म एंड रिकॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन। ठीक है। Question number 43. The Central Council is primarily concerned with option A pharmacy education and professional regulation, option B agricultural production, option C railway administration, option D income tax collection। तो इसका आंसर क्या है? सिंपल, ऑप्शन ए इज द आंसर, फार्मेसी एजुकेशन एंड प्रोफेशनल रेगुलेशन। ठीक है। सेंट्रल काउंसिल इज प्राइमरली कंसर्न्ड विद फार्मेसी एजुकेशन एंड प्रोफेशनल रेगुलेशन। Question number 44. Which of the following is an example of an educational standard? Option A minimum standard of pharmacy education, option B maximum retail price of medicine, option C drug import duty, option D hospital electricity tariff। तो उसका आंसर क्या है? एजुकेशनल स्टैंडर्ड का ऑप्शन ए इज द आंसर, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ फार्मेसी एजुकेशन। ओके। Question number 45. If a pharmacy institution fails to maintain prescribed educational standard after approval, the council may option A withdraw approval, option B grant automatic promotion, option C issue a driving license, option D change the institution into a hospital। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए इज द आंसर, withdrawal approval। ठीक है। Question number 46. Whose statement best distinguishes the central register from state register? Option A central register complies names from state register, option B state register contains names from central register only, option C they are completely unrelated, option D central register contains name student। तो उसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए इज द आंसर, सेंट्रल रजिस्टर complies name from state register। ठीक है। 47. A pharmacist changes state and seeks professional registration there. Which body is primarily involved in state registration? Option A State Pharmacy Council, option B AICTE, option C Central Drug Laboratory, option D Ministry of Finance। तो कौन सी बॉडी प्राइमरली इन्वॉल्व होता है स्टेट रजिस्ट्रेशन में? आंसर क्या है? ऑप्शन ए इज द आंसर, स्टेट फार्मेसी काउंसिल। ओके। 48. The Pharmacy Act 48. The Pharmacy Act primarily regulates option A pharmacy profession, nursing profession, engineering profession, legal profession। Obviously option answer A is the answer, pharmacy profession। ठीक है। 49. Which institution is most directly associated with the approval of pharmacy education standard? Option A Pharmacy Council of India, option B Railway Board, option C RBI, ऑप्शन डी इलेक्शन कमीशन। तो आंसर क्या है? ऑप्शन ए इज द आंसर, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। ओके। क्वेश्चन नंबर 50. द पावर टू प्रेस्क्राइब मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन इज इंटेंडेड मेनली टू ऑप्शन ए एंश्योर यूनिफॉर्म क्वालिटी ऑफ फार्मेसी एजुकेशन, ऑप्शन बी इंक्रीज मेडिसिन प्राइसेस, ऑप्शन सी रिड्यूस हॉस्पिटल बेड्स, ऑप्शन डी रेगुलेट फूड प्रोडक्शन। तो आंसर क्या है? ऑप्शन ए इज द आंसर, ऑप्शन ए इज द आंसर, एंश्योर यूनिफॉर्म क्वालिटी ऑफ फार्मेसी एजुकेशन। ओके।
Question number 51. The All India Council for Technical Education Act was passed in option A 1914, option B 1976, option C 1987, option D 1991. तो आंसर क्या है? ऑप्शन सी इज द आंसर 1987. Question number 52. The AICTE Act came into force on option A 4 March 1948, option B 12 May 1988, option C 1 April 1987, option D 15 August 1988. तो आंसर क्या है? ऑप्शन बी इज द आंसर 12 May 1988. Okay. Question number 53. AICTE stands for option A All India Council for Technical Education, option B All India Council for Training Examination, option C Association of India Council for Technical Education, option D All India Committee for Technical Examination. तो उसका आंसर क्या है? AICTE का फुल फॉर्म ऑप्शन ए इज द आंसर ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन. ओके. Question number 54. AICTE was established by option A central government, option B state government only, option C municipal corporation, option D private university. ऑप्शन डी आंसर नहीं है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ये भी नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट ओनली ये नहीं है. आंसर क्या है? ऑप्शन ए इज द आंसर सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके. Question number 55. The headquarter of AICTE is located in ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी चेन्नई. तो कहाँ पे लोकेटेड है AICTE का हेडक्वार्टर? ऑप्शन सी इज द आंसर दिल्ली. ओके. Question number 56. The chairman of AICTE is appointed by option A central government, option B state government, option C PCI, option D UGC alone. तो उसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए इज द आंसर सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके. Question number 57. The vice chairman of AICTE is appointed by option A central government, option B state council, option C PCI, option D university senate. तो आंसर क्या है? ऑप्शन ए इज द आंसर सेंट्रल गवर्नमेंट. Question number 58. Which ministry is represented in the AICTE membership according to the provided material? Option A Minister of Finance, option B Minister of Railways only, option C Minister of Tourism only, ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ओनली. तो आंसर क्या है? ऑप्शन ए इज द आंसर मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस. ओके. Number 59. The AICTE membership include representation from option A Ministry of Science and Technology, option B only Ministry of Finance, option C only Ministry of Health, option D only Ministry of Education. तो ऑप्शन डी आंसर ये नहीं है, ओनली मिनिस्टर ऑफ हेल्थ ये नहीं है, ओनली मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ये भी नहीं है. तो आंसर क्या है? ऑप्शन ए इज द आंसर मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. ओके. Question number 60. AICTE membership includes members of parliament from option A House of the People and Council of State, option B State Assemblies only, option C Municipal Corporation, option D District Councils only. आंसर क्या है? ऑप्शन डी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ओनली आंसर नहीं है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ये भी नहीं है, स्टेट असेंबली से ये भी नहीं है. तो आंसर क्या है? ऑप्शन ए इज द आंसर हाउस ऑफ द पीपुल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट. ये आंसर. ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 61. द हाउस ऑफ द पीपुल इज कॉमनली नोन एज राज्यसभा, बी लोकसभा, सी विधान परिषद, डी लेजिस्लेटिव काउंसिल. तो आंसर क्या है? ऑप्शन बी इज द आंसर लोकसभा. ओके. क्वेश्चन नंबर 62. द काउंसिल ऑफ स्टेट इज कॉमनली नोन एज ऑप्शन ए लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबलीज. तो आंसर क्या है? ऑप्शन बी इज द आंसर राज्यसभा. ओके. क्वेश्चन नंबर 63. AICTE includes representation from option A state and union territories, option B only Delhi, option C only one state, option D only private universities. तो आंसर क्या है? ऑप्शन ए इज द आंसर स्टेट एंड यूनियन टेरिटोरीज. ओके. 64. AICTE membership includes representative from organization in option A industry and commerce, option B agriculture only, option C banking only, option D sports only. तो आंसर क्या है? ऑप्शन ए इज द आंसर इंडस्ट्री एंड कॉमर्स. ओके.
Question number 65. Which of the following is included among the organizations represented in AICTE? Option A, Association of Indian Universities. Option B, Indian Society of Technical Education. Option C, Council of the Indian Institute of Technology. Option D, all of the above. तो आंसर क्या है? एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी ये भी आता है, और इंडियन सोसाइटी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ये भी आता है एआईसीटी में, काउंसिल ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये भी आता है। तो आंसर क्या है? ऑप्शन डी इज द आंसर, ऑल ऑफ द अबव। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66. Which organization represents the interest of universities in the AICTE membership described? Option A, Association of Indian Universities. Option B, RBI. Option C, PCI only. Option D, CDSSEO. तो आंसर क्या है? ऑप्शन ए इज द आंसर, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी। ओके। 67. Which body related to pharmacy is represented in the AICTE membership according to the material? Option A, Pharmacy Council of India. Option B, State Pharmacy Council only. Option D, Indian Nursing Council. Option D, Dental Council only. Simple answer is A, Pharmacy Council of India. Okay. Question number 68. Which organization concerned with the architecture is represented? Option A, Council of Architecture. Option B, Medical Council. Option C, Nursing Council. Option D, Bar Council. तो आंसर क्या है? ऑप्शन ए इज द आंसर, ऑप्शन ए इज द आंसर, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर। ठीक है। Question number 69. The National Productivity Council is represented in option A, AICTE membership. Option B, Pharmacy State Register. Option C, Central Drug Laboratory. Option D, Medical Council only. तो आंसर क्या है? ऑप्शन ए इज द आंसर, AICTE membership. Okay. Question number 70. Which organization is not listed in the provided AICTE representation? Pharmacy Council of India. Option B, Council of Architecture. Option C, National Productivity Council. Option D, Central Drug Laboratory. तो आंसर क्या है? ऑप्शन डी जो आंसर, सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी। ओके। Question number 71. The AICTE Council includes representation from professional bodies in option A, Technical and Management Education. Option B, only Medicine. Option C, only Law. Option D, only Agriculture. तो आंसर क्या है? ऑप्शन ए इज द आंसर, Technical and Management Education. Okay. Question number 72. The members secretary of AICTE is appointed by option A, central government. Option B, state government. Option C, PCI. Option D, EGC. तो आंसर क्या है? ऑप्शन ए इज द आंसर, सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके। Question number 73. The primary concern of AICTE. Option A, technical education. Option B, drug dispensing. Option C, pharmacist registration. Option D, narcotic drug control. तो इसका आंसर क्या है AICTE का? ऑप्शन ए इज द आंसर, टेक्निकल एजुकेशन। ओके। Question number 74. Which of the following is most closely associated with AICTE? Option A, technical and management education. Option B, pharmacist registration. Option C, drug manufacturing license. Option D, narcotic drug storage. तो आंसर क्या है? ऑप्शन ए इज द आंसर, टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन। ओके। Question number 75. A pharmacy student is comparing PCI and AICTE. Which statement is most appropriate? Option A, PCI is specifically associated with pharmacy education and profession, while AICTE deals broadly with technical education. तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए इज द आंसर, PCI is specifically associated with pharmacy education and profession, while AICTE deals broadly with technical education. Okay. Question number 76. Which body is specifically associated with the registration of pharmacist? Option A, PCI, State Pharmacy Council under the Pharmacy Act. Option B, AICTE. Option C, National Productivity Council. Option D, Council of Architecture. तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए इज द आंसर, PCI, State Pharmacy Councils under the Pharmacy Act. Question number 77. Which body is more directly associated with technical education at the national level? Option A, AICTE. Option B, State Pharmacy Council. Option C, Central Drug Laboratory. Option D, Drug Controller. Option A is the answer, AICTE. Question number 78. Which of the following is a common examination trap? Option A, confusing PCI with AICTE. Option B, confusing Pharmacy Act with NDPS Act. Option C, confusing State Register with Central Register. Option D, all of the above. The answer
कंफ्यूजिंग पीसीए विथ एआईसीटी, ये सही है। कंफ्यूजिंग फार्मेसी एक्ट विथ एनडीपीएस एक्ट, ये भी सही है। कंफ्यूजिंग स्टेट रजिस्टर विथ सेंट्रल रजिस्टर, ये भी सही है। तो आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव। ओके। Question number 79. A question asked about the central register of pharmacists. The candidate should primarily recall. Option A Pharmacy Act, option B AICTE Act, option C NDPS Act, ऑप्शन डी ड्रग एंड मैजिक रेमेडिक्स एक्ट। तो आंसर क्या है? ऑप्शन ए इज द आंसर, फार्मेसी एक्ट। क्वेश्चन नंबर 80. A question asked about the headquarters of AICTE. The correct city is ऑप्शन ए ऑप्शन बी न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी अहमदाबाद। तो आंसर है ऑप्शन न्यू दिल्ली। Question number 81. A pharmacy college is found to have inadequate prescribed educational facilities after receiving approval. Which regulatory action may follow? Option A withdrawal of approval. Option B automatic recognition forever. Option C automatic conversion to a medical college. Option D no action. Okay. Option A is the answer, withdrawal of approval. Question number 82. A student claims that the central register contains only pharmacists from Delhi. Which statement correct the misconception? तो आंसर ऑप्शन ए it complies name from different state. ऑप्शन A is the answer, it compiles name from different state register. Pharmacist name is present in the state register. What is the significance? Option A, it indicates registration under the state pharmacy council. Option B, it automatically makes the person a doctor. Option C, it grants an AICTE degree. Option D, it permits manufacture of all drugs. तो आंसर क्या है? Option A is the answer, it indicates a registration under the state council pharmacy council. Okay. Question number 84. Which body would be most directly relevant if the issue concern pharmacy education? Option A PCI, option B RBI, option C AIMS, option D Election Commission. आंसर क्या है? ऑप्शन A is the answer, PCI. Question number 85. Which body would be most directly relevant if the issue concern the national framework for technical education? Option A is the answer, AICTE. Okay. Question number 86. Which statement about the central council is most appropriate? Option A, it can inspect institutions seeking approval. Option B, it manufactures medicines. Option C, it sells prescription drugs. Option D, it controls hospital food services. तो आंसर क्या है? ऑप्शन A is the answer, it can inspect institutions seeking approval. Okay. If an approved examination no longer conforms to prescribed educational standards, the central council may option A withdraw approval, option B ignore the matter, option C cancel all state councils, option D change the pharmacy act automatically. तो आंसर क्या है? ऑप्शन A is the answer, withdraw approval. Okay. Question number 88. Which one is correctly paid? Option A central register, central council. Option B state register, state pharmacy council. Option C technical education, AICTE. Option D all of the above. तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन डी इज द आंसर, ऑल ऑफ द अबव. ओके. क्वेश्चन नंबर 89. ए कैंडिडेट रिमूव सेंट्रल रजिस्टर बट फॉरगेट व्हिच बॉडी मेंटेन इट, व्हिच इज करेक्ट? तो चलो एक ऑप्शन ए AICTE, ऑप्शन बी सेंट्रल काउंसिल PCI, ऑप्शन सी स्टेट मेडिकल काउंसिल, ऑप्शन डी काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर. तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी इज द आंसर, सेंट्रल काउंसिल PCI. ओके. क्वेश्चन नंबर 90. Which of the following is not directly related to pharmacist registration? Option A state pharmacy council, option B central register, option C pharmacy act, option D AICTE headquarters. तो इसका आंसर क्या है? Option D is the answer, AICTE headquarters. Okay. Question number 91. The best reason for maintaining a central register is to option A compile register pharmacists from different state register, option B monitor hospital patients, option C record drug prices, option D register pharmaceutical companies. तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन A is the answer, compile register pharmacists from different state register. Okay.
Question number 92. If a person has not fulfilled the legal requirements for pharmacist registration, the person should option A claim to be a registered pharmacist, option B avoid falsely representing themselves as a registered, option C sign prescription as a pharmacist, option D dispense registered medicine as a pharmacist. तो आंसर क्या है? ऑप्शन बी इज द आंसर, avoid falsely representing themselves as a registered. Okay. Question number 93. Which situation most clearly demonstrate the purpose of pharmacy registration? Option A ensuring professional entry is regulated, option B fixing the price of medicine, option C controlling hospital electricity, option D regulating engineering colleges. तो आंसर क्या है? ऑप्शन ए इज द आंसर, ensuring professional entry is regulated. Question number 94. A pharmacy institution seeks approval but lacks prescribed facilities. The central council's inspection would primarily determine option A whether prescribed norms are fulfilled, option B whether students like the college, option C whether medicine prices are low, option D whether the college has its criteria. तो इसका आंसर क्या है? Option A is the answer, whether prescribed norms are fulfilled. Okay. Question number 95. Which sequence correctly connects the regulatory concepts? Option A Pharmacy Act, Pharmacy Council, Education Standard Registration. Option B AICTE Act, Central Register, Pharmacist Registration. Option C NDPS Act, Pharmacy Education, AICTE. Option D Drug and Magic Remedies Act, Central Register. ये सब गलत है. ऑप्शन ए इज द आंसर, फार्मेसी एक्ट एंड फार्मेसी काउंसिल, एजुकेशन स्टैंडर्ड registration. Okay. Question number 96. A student is asked which body regulates pharmacy education standard and approves pharmacy courses. The best answer is option A PCI, option B RBI, option C AICTE alone, option D Central Drug Laboratory. तो आंसर क्या है? ऑप्शन ए इज द आंसर, PCI. Okay. Question number 97. A student is asked which body is associated with the technical education rather than pharmacist registration. The correct answer is option A is the answer, AICTE. 98. Which of the following combination contains only pharmacy law concept? Option A Central Register, State Pharmacy Council, Education Regulation. तो आंसर है ये ऑप्शन ए इज द आंसर, सेंट्रल रजिस्टर, स्टेट फार्मेसी काउंसिल, एजुकेशन रेगुलेशन. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 99. A candidate is prescribing for a pharmacist examination. Which combinations should receive priority from this chapter? Option A Act, Sections, Councils, Registration, Education Regulation and Penals. Option B only drug brands name, only chemical structures, option D only hospital architecture. तो आंसर क्या? ऑप्शन ए इज द आंसर. ओके. क्वेश्चन नंबर 100. Which statement best summarize the Pharmacy Act? Option A it regulates the pharmacy profession, pharmacy education and registration of pharmacy. ए आंसर, ऑप्शन ए इज द आंसर. ओके. तो आज के लिए इतना ही. तो आज के लिए इतना ही. मिलते हैं दोबारा और एक नई वीडियो में. अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना. ठीक है. और कमेंट